So let's write uniqueness by using Gronwall inequality. Uniqueness So as we discussed earlier, so we assume two solutions. Y and Z. Then we write their difference y minus z, which is t0 to t fsys minus fs zs. Okay, write y and z, then subtract. So y naught will cancel out, which is less than or equals to, you can write minimum to t to t naught to maximum t to t naught, then integrand okay. So apply Lipset condition on this difference. Using Lipset condition, you can write it, this is less than or equals to constant L minimum to maximum. So here you got ys minus zs ds using Lipset condition or using Lipset continuity in the sense of second variable. So now use Gronwall inequality. Now use Gronwall inequality. इनफैक्ट आपने क्रोरली यूज करना है विद जो एफ था आपका फंक्शन दैट इज वाई टी माइनस जेड टी. मॉडुलस है, पॉजिटिव है. जो कांस्टेंट, जो ग्रोनवाल में कांस्टेंट था ये के, उसकी जगह एल है, लिपसेट कांस्टेंट. So what inequality says, if you have ft which is yt minus zt less than constant k integral t naught to t same function का integral, then this function is zero. तो यहाँ पे भी ये चीज है, function less than or equal to constant integral t naught to t or t to t naught depending on the situation, so that everything is positive. ठीक है, ये मिनिमम टू मैक्सिमम क्यों लिख रहे हैं? जस्ट टू मेक एवरीथिंग पॉजिटिव. अगर टी बिगर है तो टी नॉट टू टी होगा, अगर स्मॉलर है तो रिवर्स होगा. और इंटीग्रेंड पॉजिटिव है, जो ये है वही राइट हैंड साइड में है एफ. सो बाय ग्रोनवाल इनइक्वालिटी, सो वी हैव जो एफ लिखा है मैंने, एफ इज इनफैक्ट yt minus zt. This is identically 0. So yt equals to z of t. So solution is unique. Okay.
So just rewrite the earlier proof that I have written earlier. सिर्फ उसमें आर्गुमेंट चेंज करना है आपने. यहाँ तक तो लिखा ही था आपने यूनिकनेस में, यहाँ तक. देन फिर आपने रिकर्सिवली अप्लाई किया था प्रीवियस प्रूफ में, बट यहाँ पे आपने क्या करना, जस्ट डायरेक्टली यूज ग्रोनवॉल इनइक्वालिटी. सो यू हैव y इक्वल्स टू z. Now I am writing the proof of another existence theorem that is known as non-local existence theorem. So 90% proof is similar to previous proof Picard existence theorem, but here अब नॉन लोकल का मीनिंग क्या है कि जो आपका डोमेन है वो अनबाउंडेड है. फर्स्टली यू हैव टेकन रेक्टेंगुलर डोमेन एंड यू से बाकी कंडीशन सेम है. एफ इज कंटिन्यूस, टी में कंटिन्यूस है और वाई में लिपसेट कंटिन्यूस है. सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो आपका जो रीजन है दैट इज अनबाउंडेड. नाउ इसको हम स्ट्रिप बोलते हैं, इस टाइप का रीजन है, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, वाई में अनबाउंडेड है. सो दिस काइंड ऑफ रीजन यू हैव नाउ. बाकी सब कुछ सेम है. सो let f is continuous function on the region which is strip s ty in R2 where t minus t not less than a. t में तो सेम है रीजन, बट y can be anything. And further, f satisfies a Lipset condition in y in region S. Then there exists a unique solution of initial value problem y dash equals to f of ty with initial condition y at t naught equal to y naught in the interval t minus t naught less than a. So everything is same that you did earlier except one thing. Now your region is not bounded. तो प्रूफ में बाकी सब कुछ सेम है, एक पॉइंट चेंज होगा. जो की पॉइंट है वो पॉइंट क्या था कि पहले आपके पास रेक्टेंगल था और हमने क्या कहा था, एफ इज कंटिन्यूस है, देन इट इज बाउंडेड. बट अब अगर रीजन ये है और अनबाउंडेड है, देन कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाइज बाउंडेडनेस. फिर आप नहीं कह सकते कि ये बाउंडेड है. जैसे मैं ये कहूं कि फॉर एग्जांपल एफ टी वाई जस्ट टी वाई है, तो कंटिन्यूस है ये, बट वाई कैन बी एनीथिंग लाइक प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, देन इट इज नॉट बाउंडेड. बट इफ यू टेक दिस फंक्शन ऑन सम बाउंडेड रीजन लाइक दिस, then it is bounded. ओके, तो प्रूफ सिमिलर है, बट यहाँ पे हमने बाउंडेडनेस यूज किया था, वहां पे हम थोड़ा डिफरेंट वे में लिखेंगे इसको. ओके, एवरीथिंग इज सेम, सो जस्ट आई विल रीराइट ऑल स्टेप्स.
Okay, you remember the proof of previous one or forget everything? बोलो, ध्यान है प्रूफ कैसे किया था? हेल्प मी टू राइट. फर्स्टली assumption लिख लो जब थ्योरम प्रूफ करके व्हाट इज गिवन. सो यू कंसीडर initial value problem which is dy by dt equals to this. Let f is continuous and satisfy a Lipset condition. Condition with constant L. Okay. So region is region आपका क्या है? Ty in R2. T lies from minus a plus t naught to a plus t naught, and y can be anything from minus infinity to plus infinity. Since S is not bounded, so F may not be bounded in S. Since region is not bounded, so you cannot say continuity will imply boundedness. फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या है? यू विल राइट पिकार्ड अप्रोक्सीमेशंस. उनको ही आप शो करोगे. सो वी कंस्ट्रक्ट a sequence of functions on interval t naught minus a to t naught plus a. So in this direction, first approximation is, जिसको मैं y1 लिख रहा हूँ, which is initial condition. Then अब साथ के साथ में, अब ये तो कांस्टेंट है ना y1, ये तो बाउंडेड होगा. तो मैं क्या लिख रहा हूँ? लेट मॉड ऑफ y1 which is y0, वैसे तो कांस्टेंट ही है, तो लेट अस राइट इट m1. ठीक है, इट विल बी कांस्टेंट लाइक 1 2 3 4 एनीथिंग. ओके. और सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? नेक्स्ट यू राइट y2. y2 is again y0 plus t naught to t fs. यहाँ पे y1 आएगा, और y1 क्या है? इनफैक्ट y0 ही है, ये कांस्टेंट ds. So this is my next approximation. अब इस फंक्शन को देखिए, f को. f फर्स्ट पैरामीटर t की वैल्यू है, t बाउंडेड है ये. और सेकंड पैरामीटर कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज आल्सो बाउंडेड. तो f के जो दोनों आर्गुमेंट हैं, दे आर बाउंडेड. So for this, at least for this f, you can say this function is bounded. Why it is bounded? Because you have s and y0, and y0 is fixed, and s, what is s? This is value of t, and t is bounded. So you can say at least for this function this is bounded. So you can say right hand side. So y2 is a continuous function.
चलो कंटिन्यूटी से इंप्लाई कर लेते हैं. सो इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन in the given domain. So it is continuous function. So it will attain its maxima. मतलब जो मैक्सिमा होगा वो फाइनाइट होगा. बाउंडेडनेस भी यही होती है. So it will attain its maximum in given region. और जो मैक्सिमा है इसका, let y2t less than or equals to m2. So therefore y2, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, आप दो दो का डिफरेंस निकालोगे इटरेशंस का, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, तो डिफरेंस निकालते जाते हैं. तो फर्स्ट दो का डिफरेंस क्या होगा, y2 माइनस y1. इसको मैं लिख सकता हूँ लेस देन और इक्वल्स टू, ये लिख सकते हैं, these are the consequence of triangle inequality, make right hand side bigger, so m2 plus m1, और इसको मैं कह देता हूँ m, m2 plus m1 को से m. So this step is different from previous proof. So in other words, you can say the first difference y2 minus y1 will be bounded because y1 is constant and y2 uses y0 constant. So this is also bounded. So this difference is bounded. फिर आप नेक्स्ट लिखिए y3, y4 then and so on. I hope it is clear. Now write next difference. So I'm not writing values again and again. So just I'm writing next difference now. Next two iterates. So like y3 लिख लेते हैं, लिखना है तो y3 will be y0 plus t naught to t fs y2s ds. Therefore y3 minus y2, so this will be t naught to t fs y2 minus fs y1 ds then modulus. So which is less than or equals to integral minimum to maximum integrand use Lipset condition now. So what you got using Lipset condition, you have this. So y2 minus y1 using Lipset continuity or Lipset condition. अब y2 minus y1 आपने पीछे लिखा है. What is y2 minus y1? Go to previous one. This is less than m. So what you can write here? Less than or equals to L m ds का इंटीग्रल s, so t minus t naught. Okay. Similarly, write next one, y4 minus y3. Similarly, आप लिखना इसको y4 minus y3
less than or equals to, I'm writing final answer L square m t minus t naught square. फर्दर आप लिखोगे वाई एन प्लस वन, वाई एन प्लस वन विल बी वाई जीरो प्लस टी नॉट टू टी, then we assume that result is true up to this point, yn plus 1 minus yn, that is less than or equals to, सिमेट्री बना रहे हैं, ठीक है, y4 में 2 है तो उसमें n प्लस 1 में 2 कम, ln माइनस 1, m एक ही रहेगा, और t माइनस टी नॉट 4 है तो स्केयर है, यहाँ पे 2 कम है ना, तो n प्लस 1 है तो 2 कम उससे n माइनस 2 डिवाइड बाई ये फैक्टोरियल बन जाएगा n माइनस 2. Similar kind of stuff we have done in proving of Picard existence theorem. Almost similar. Just ये वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है, पावर का फर्क है जस्ट. अब ये फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका पहला चेंज हो गया, फर्स्ट चेंज ये था, इसकी वजह से. So due to this you are getting different, but that is quite similar. Okay, so we assume this and we prove by induction. So for this you will write next one yn plus 2. नेक्स्ट हम लिखते हैं ये क्या बनेगा. सो yn plus 2 क्या होगा? सर हाँ जी सर n माइनस 2 कैसे आया? l की पावर और इसकी पावर सेम नहीं होती? 4 था ना तो 2 आ रहा है ना, यहाँ पे 3 था तो 1 आ रही ना पावर. पहला देख लो 2 कम है उससे, नहीं ये n plus 1 है तो 2 कम क्या होगा? सर तो l की पावर भी n माइनस 2 आनी चाहिए थी. नहीं, अच्छा वो भी हाँ सेम आएगा. सर या तो हम n माइनस 1 ही लिख लेते हैं टोटल में. ये ठीक है, ये कह रहे हो? सर हमने फर्स्ट टर्म से n प्लस 1 से 2 टर्म्स मतलब पीछे जाना है तो n माइनस 1 होगी ना. अच्छा हाँ हाँ तो यस सर n माइनस 1 आएगी. दोनों के n minus 1 आएंगे, सॉरी हाँ ये ठीक था ना, फिर n minus 1 ये भी n minus 1 आएगा है ना, ये गलत लिखा है मैंने. हाँ n plus 1 से 2 कम करना है ना, सो n minus 2, सो n minus 1, थैंक यू, n minus 1, ठीक है, ठीक है बच्चे. यस सर. ओके थैंक यू. सो yn plus 2 क्या होगा, बोलो वैल्यू. ये होगा ना, yn plus 2 में पिछला यूज होगा yn plus 1 s ds, और ये है yn plus 1 को लिखा ही है मैंने. जब माइनस करोगे तो y0 विल कैंसिल आउट. इंडक्शन में ऐसे ही करते हैं ना, ये हमने अज्यूम किया, तो अगर नेक्स्ट भी सिमिलर बन जाए तो कह दोगे आपकी दिस इज ट्रू फॉर एवरी, है ना, ऐसे करते हैं इंडक्शन में. सो y0 कैंसिल आउट, सो इंटीग्रल सेम वे में लिख लो. सो मिनिमम t to t naught to maximum t to t naught integrand, first you apply Lipschitz, then ds पे मैं मॉड नहीं लगा रहा क्योंकि ds जस्ट इंटीग्रल का है ना, ये तो पॉजिटिव ही होता है. चाहो तो आप कई बुक्स इसमें भी मॉड लगाती हैं, बट नो नीड टू पुट मॉडुलस. सो अप्लाई लिपसेट कंडीशन, व्हाट यू गॉट, ये साइड बड़ा होगा, l कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मिनिमम टू मैक्सिमम. सो यू गॉट yn plus 1
माइनस वाई एन। अब ये आपने रिजल्ट ऊपर ट्रू अज्यूम किया है, ये वैल्यू फिट कर दो यहाँ पे। फिट करके इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा, एक एल पावर एन आ जाएगा, एम तो एक ही रहेगा। डी एस का इंटीग्रल आपका एस होगा, एक टी माइनस टी नॉट और आ जाएगा ना वहां से। एन माइनस वन फैक्टोरियल है ना पहले, सो टी माइनस टी नॉट पावर एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल। तो सिमिलर काइंड का रिजल्ट आ गया। सो बाय इंडक्शन दिस इज ट्रू फॉर एवरी एन। जब इसका इंटीग्रल करोगे टी माइनस टी नॉट पावर एन डिवाइड बाई एन आ जाएगा, तो एन 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 माइनस वन फैक्टोरियल एन बन जाएगा ना। समझ रहे हो ना इंटीग्रल कैसे किया मैंने, आपने इसका इंटीग्रल किया टी माइनस टी नॉट एन माइनस वन का, एस माइनस टी नॉट एन माइनस वन, दैट विल बी एस माइनस टी नॉट एन डिवाइड बाई एन। तो एस को एक बार टी फिट करोगे तो टी माइनस टी नॉट आ जाएगा, जब टी नॉट फिट करोगे दिस वुड बी जीरो। So by induction result is true for every integer n। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, अब उसको दोबारा से लिख लेते हैं। सो हमने therefore so we have y n plus वन माइनस वाई एन, दोबारा लिख रहा हूँ मैं इसको, एल एन माइनस वन एम, देन टी माइनस टी नॉट एन माइनस वन डिवीजन n minus वन factorial, and you can write t minus t naught less than a है ना, तो यहाँ पे आप ये भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा रीराइट कर लो इसको, तो m यहाँ पे रह जाएगा, l t minus t naught a हो गया ये, क्या यूज किया हमने, सिंस mod of t minus t naught less than or equals to a। So next step क्या कॉशी बनाओगे इसको, so you will write ym minus yn। Now we write ym minus yn, दो टर्म का डिफरेंस लिखोगे, जैसे हमने प्रीवियस प्रूफ में लिखा लिखा था, उसको हम ये लिख सकते हैं वाई एम माइनस वाई एम माइनस वन प्लस वाई एम माइनस वन माइनस वाई एम माइनस टू, देन वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। तो सब में एम सारी टर्म लिखोगे, एम कॉमन आ जाएगा, समीशन क्या क्या वैल्यू आएंगी, अगर टर्म की लिखोगे तो क्या क्या वैल्यू आएंगी। फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी इसकी, इसको देख के बोलो, वाई एम माइनस वन। क्या वैल्यू होगी, तो समीशन में बोल दो के एन टू एन माइनस वन एल ए
k माइनस वन डिवाइड बाई k माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक लिखा मैंने। k इक्वल टू n है तो ये लास्ट टर्म आ जाएगा ना, k माइन n माइनस वन, और k इक्वल टू m माइनस वन है तो ये इसमें m माइनस टू आ जाएगा। ठीक है ना, सारी टर्म लिख लो, समेशन लगा दो फिर उसमें। अब ये एक्सपोनेंशियल की पावर बनेगा, सो यू नो दैट एज e पावर l l a which is summation k equals to 0 to infinity, k और k माइनस वन से तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, which is finite. So this implies m k equal to n to m minus 1 la. So this will be less than epsilon as k goes to as m goes to infinity. Or we can write more precisely, you can say given a Fallon positive there exists. Okay, so for given a Fallon positive there exists an integer n naught, so that m summation k equals to n to infinity so this is less than epsilon. So this implies ymt minus ynt, this is less than epsilon. So this implies yn is a Cauchy sequence and hence it is convergent. And limit is, अब कन्वर्ज करेगा तो कोई ना कोई लिमिट होगा, एंड लिमिट इज yt से. So just repeat those argument, nothing new. So this is a convergent sequence. Finally, just we rewrite those steps. Now we show that the limit yt, अब लिमिट yt क्या बनेगी, t नॉट टू, देखो लिमिट हम कैसे लिखते हैं, अब जब आपने रिकरेंस रिलेशन लिखा है, सो यू हैव दिस रिलेशन, अब ये कन्वर्ज करेगा तो yn प्लस वन क्या बन जाएगा, ये भी y बन जाएगा और ये yn भी y, लिमिट का मीनिंग तो यही होता है, तो दोनों साइड में ये y बन जाएगा, yn प्लस वन विल बी y, yn इज आल्सो y. तो ये रिलेशन उसी से देख के लिखा मैंने, एफ एस yn इज आल्सो y. तो इसके लिए हम क्या कंप्यूट करेंगे, फॉर दिस वी राइट सेम स्टेप है, अब डिफरेंस कंप्यूट कर लो, इसका और इसका, so this is less than or equals to minimum t to t naught to maximum t to t naught लिपस्टेड लगा दो इस पे, पहले ये लिखोगे एफ एस वाई एन माइनस वन एस माइनस एफ एस वाई एस डी एस, यूज लिपस्टेड कंडीशन, किसका डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, वाई एन प्लस वन में ये आप वाई एन कह दो,
ये मैंने वाई एन से लिया है। इन दोनों का डिफरेंस अगर जीरो होगा तो जो वाई एन है उसका जो लिमिट है वाई दैट सेटिस्फाई द इंटीग्रल इक्वेशन। नाउ वी शो दैट द लिमिट, चेक लाइन कंप्लीट नहीं हुई, द लिमिट इज ए सॉल्यूशन। तो इस पे लिपस्टेड लगा दो। ये स्टेप हमने किया है बिल्कुल सेम है। लिपस्टेड यूज करोगे तो लेस देन और इक्वल्स टू एल मिनिमम टू मैक्सिमम। सो and since yn converges to y, so right hand side this guy will be 0, so this will be 0, so you can say this integral converges to this integral, sorry यहाँ पे s लिखना है, integral this converges to this and दोनों साइड y ऐड कर दो, so you can say this converges to this। यानी कहने का मीनिंग है जो लिमिट है that satisfy the integral form of the equation। Thus limit y satisfy the integral form of IVP, hence there exists a solution of given IVP, and you can write uniqueness proof, same uniqueness proof that you have done earlier। यूनिकनेस में तो बाउंड यूज होता ही नहीं है, सो यूनिकनेस विल रिमेन सेम। यूनिकनेस का जो प्रूफ है वो सेम है जैसा हमने पहले किया था। और ये किसका प्रूफ है? दैट इज एग्जिस्टेंस। So only one two lines have been changed as f is not bounded, so you cannot use bound of f. Instead of bound, you use that first approximation is bounded as it is constant, and second approximation uses first, so it is also bounded. So using that bound, you can go further. Okay, then apply induction, and by induction you can say this result is true for every positive integer n, and then you prove that yn is a Cauchy sequence। Cauchy sequence है R में, तो ये कन्वर्ज करेगा तो कोई ना कोई उसका लिमिट होगा, और फिर फर्दर हमने ये शो कर दिया जो उसका लिमिट है दैट इज सॉल्यूशन। Okay, we show that their limit is solution।
Any doubt in this proof? Hmm? So now you can say existence and uniqueness theorem is applicable on these bounded domains as well as on these unbounded domains. For both of the regions, you can say this result is true. Let us write an example. I think we have solved earlier, but now we put unbounded domain. For example, consider IVP y prime equals to sine of, or you can take cos of ty, it's your choice. T cos of ty with the initial condition 1, show that solution exists on unbounded region mod t less than 1 and देखो रीजन ऐसे भी लिख सकते हैं और कई बुक्स ऐसे भी लिखती हैं इसको सो टी ऑफ वाई बिलोंग्स टू R2 एंड मॉड ऑफ टी लेस देन 1 और y गिवन नहीं है y गिवन नहीं है इसका मीनिंग है y कैन बी एनीथिंग या ये लिखा हो या ये लिखा हो बोथ आर सेम थिंग ओके चाहे y ना लिखा हो सो दिस मींस y कैन बी एनीथिंग तो इसमें आप क्या चेक करोगे अजम्पशन वही है कंटिन्यूटी चेक करनी है सो व्हाट इज f इज राइट हैंड साइड t cos ty which is continuous for every t and y for any t comma y t polynomial continuous है cos continuous they are continuous everywhere product of two continuous function is also continuous so now take 2 points in domain points आप ले लो ty1 and ty2 and then compute the difference fty1 minus fty2 so which is t cos of ty1 minus t cos of ty2 okay so you can rewrite it mod t cos of ty1 minus cos of ty2 apply mean value theorem apply mean value theorem so what you got partial derivative of cos with respect to y t यहाँ पे आ जाएगा टी वाई का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव पहले साइन आ जाएगा साइन ऑफ टी वाई वाई की जगह सी ठीक है साथ में y1 माइनस y2 और c क्या है c लाइज बिटवीन y1 एंड y2 c lies between y1 and y2 so now find maxima of this side t is 1 t1 sine is also 1 so
So which is y1 minus y2. So f is continuous, it satisfies Lipset condition, so there exists a unique solution, at least on this region. So what conclusion you make? So f is Lipset, hence there exists a unique solution on interval mod t less than a. So if I say f is Lipset, or I say f satisfy Lipset condition, or I say f is Lipset continuous, all three things are same. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ f is Lipset means it satisfy Lipset condition, or I can say f is Lipset continuous. So all three things are same. So in order to prove existence and uniqueness, you need to check continuity of f and Lipset in y. If it satisfies both conditions, then there exists a unique solution of given initial value problem. Any doubt? See you tomorrow. Okay, then see you tomorrow.